the court may determine both, although only one of them may be necessary for the question which was not necessary for question which was not necessary. The opinion of the tribunal on the question which was not necessary to decide. The opinion of the tribunal on the question. The opinion not necessary to decide. I don't think that not necessary to decide. This view can be. I don't think that found fault. I don't think that this view can be. So therefore, found fault with. In para 47, so therefore Gupta's case. So in para 47, in para 47, not in the first place case, this is clearly contrary. Sovereignty has come to an end. In the first place, sovereignty has come clearly contrary. This is clearly contrary. In Premnath Kaul's case, which has been in Premnath Kaul by Mr. Dhawan. In Premnath Kaul's case, which has been cited by Mr. I just want to show to your lordship only one observation from Premnath Kaul. I just want to show to your lordship only one. I just want to show to your lordship only one observation from that your lordship will find. That your lordship will find. That is para 16 of that judgment. That is para 16 of that judgment. That is para 16 of that judgment. What is the PDF page? What is the PDF page? What is the PDF? Second line from the top. We have no doubt. Second line from the top was perfect. Second line from the top that the Jura. We have no doubt that the Jura was under which the Constituent Assembly if the Constituent Assembly was properly constituted, if the Constituent Assembly if the Constituent Assembly was decided not to pay any, decided not to pay any how the validity to understand this is how the validity of this. Your lordships have specifically recognized the power. Your lordships have specifically recognized. Your lordships have specifically recognized the power to convene a Constituent Assembly. To convene a Constituent Assembly. That's an act of sovereignty. That's an act of sovereignty. So there is one more para. So there is one more para. So there is one more para. Who has read? He has read para. He has read para. Who has read? I'm sorry, I read para 42, not para 16. I stand corrected. I'm sorry, I read para 42. Not. I'm sorry, I read para corrected, not para 16. I stand corrected. So therefore, in my respectful submission, the observation. So therefore, in my respectful submission. So therefore, in my respectful observation to the effect 47, the sovereignty has come to 47 to the effect. Santosh Gupta's the sovereignty has come to an end. Clearly, the sovereignty has come to an end. In any case, it's an arbiter. Clearly, contrary. In any case, clearly, in any case, it's an arbiter. In any case, it's an arbiter. There is not much of discussion in that judgment. There is not much of discussion in that judgment on this issue. And it's a judgment of only bench of 2 learned judges. And it's a judgment of only. So my next point is bench of 2 learned judges. So my next point is. So my next point Article 356. Much has been said. Article 356. But there is one aspect which I want to highlight. But there is one aspect. It may be an overlap. One highlight. There is a particular aspect which I want to. It may be an overlap, but. It may be an overlap aspect which I want to emphasize. Particular aspect which I want to emphasize. What is the effect of the presidential? What is the effect of? What is the effect? Kindly turn to Article 355. The presidential proclamation. The kindly turn to Article 355. What is the purpose of 346? What is the purpose of 346? What is the purpose of 346? 356. There is breakdown of the machinery accepted. The affairs of the breakdown of the machinery. There is breakdown of the machinery. The affairs of the state cannot be carried on. The affairs of the state cannot be carried on in accordance with the Constitution. Accepted. But does that justify doing something which is unconstitutional? But does that justify? But does that justify doing something which is unconstitutional? Say in the first place. In the first place, assembly was dissolved. In the first place, in November, J&K assembly was dissolved. J&K assembly was dissolved. In November, he assumed the powers under the J&K Constitution. And the governor assumed. He assumed the powers under the J&K. He assumed the powers under the J&K Constitution, and not the 356 proclamation. And not
December 2018. Proclamation came. In December 2018. This presidential proclamation under 356 is clearly without proclamation under this presidential proclamation under 3 without jurisdiction. Is clearly without jurisdiction. The reason is that the governor has already dissolved the assembly. The reason is the governor has already dissolved the assembly. The governor has assumed all the powers of the state. The governor has assumed all the powers. Now certainly the governor assuming the powers can't be a breakdown. Now certainly the governor assuming the powers can't be a breakdown to suggest that. And therefore it would be absurd to suggest that. It would be absurd to suggest that. And therefore president has to intervene under 356. It's a jurisdictional issue. It's a jurisdictional issue. It's a jurisdictional issue. 356 has been invoked for a collateral purpose. And 356 has been invoked for a collateral purpose. And that collateral purpose is apparent on the face of the record. And that collateral purpose is apparent. And that collateral purpose is apparent on the face of the record. You suspend the two provisos to Article. You suspend the two provisos. You suspend the first proviso which applies to all the states. To Article 3. The first proviso which applies to all the states. The first proviso which applies to all the states. Change the name of the state, etc. Alter the boundaries. That you can't alter the name of the state, etc. Change the name of the state, etc. Without use through its legislative giving an opportunity to suspend use through its legislative. Second proviso which applies to JNK. Second proviso which applies to the now I cannot understand if there is breakdown of the machinery. Now I cannot understand if there is breakdown of the machinery. What is the rational necessity? There is an implied limitation on suspending these provisos. There is an implied limitation on this power. There is an implied limitation on this power. Can you suspend the entire constitution? Because the president has issued proclamation under 356. Because the president has issued proclamation under 356. Once you accept that there are implied limitations, once you accept that there are implied limitations, the suspension of any part of the suspension of any part of the constitution must have a result of presidential proclamation. As a result of presidential, the objective that is to be achieved, and the objective that is to be achieved, the objective that is to be achieved, the objective that is to be achieved in Article 355. Kindly see Article 355. Kindly see the duty of the center. The duty of the center. The duty of the center. It shall be the duty of the Union to protect every state against. It shall be the duty of the Union to protect every state and to ensure every state of every state and ensure that the government of every state, the government of every state is carried on. Now read Article 355, 356, 357. Now read Article 355. Now read Article 355, 356, and the only result is that the state as an the only result is that the state as an entity must survive. Now, what is the purpose of suspending the proviso? Ultimate design. Now, what is the purpose of suspending the proviso? What is the purpose of design? Contrary to the mandate of 355. The state of JNK. Contrary to the mandate of 355. Contrary to the mandate of 355. The JNK Reorganization Act, therefore you are not the JNK Reorganization conceived in an unconstitutional born is conceived in an unconstitutional. Now let me test even the wording. Patent. Now let me test even the wording. Now let me test even the wording. I have shown you a lot in the context. I have shown you a lot in the context. Kindly see what make such incident and consequences make such incident and consequent provisions and consequential provisions as applicable in giving effect to the objects of in giving effect to the objects. Suspension of those provisos, what is the nexus? Suspension of those provisos, what is suspension of those provisos? In the entire affidavit of the nexus union, I don't find the entire affidavit of light being thrown on the entire affidavit of I don't find any union. Light being thrown on this aspect of the matter. Light being thrown on this aspect. Then kindly see 357. Then kindly see 357. Then kindly see 357. 357.
1B, 357 for Parliament or for the President or other authority in whom such power for Parliament or for the President or other Parliament or for the President or other authority in whom such and imposing laws or authorized under some power and imposing duties or authorizing imposing duties or authorizing and imposing of powers and now this is a power to make law or officers and now this is a power to make law. The way Now this is Dr. a power to Dhawan, make law. everybody has argued that 356 The way is a temporary Dr. Dhawan, thing. everybody has argued Dr. that Dhawan, 356 everybody is a has temporary argued thing. that 356 is a temporary thing. मैं को पूछो कि क्या मैं को पूछो कि क्या $1950s तक इंडिया में अनटचेबिलिटी लीगल थी। आप this that the power or the function that the power that the state assembly performs under the state assembly performs to Article 3 under the provisos to Article 3 are not power of making law. Power of making law. Article 357, 356, Article 357, 356, the state legislature's power to make law. The state legislature's power to make law, which is taken over by the Parliament or by President. But this is not that power. Ordinance. The power under proviso but this is not that power at all. And the power recognized by not lawmaking power at all. And this is recognized by judgment in Keshavananda Bharati's case. Again, I have to refer to case. Justice Khanna just observed. Again, I have to refer to Justice Khanna. And that is para 1351. And that is para 1351, volume 15, which PDF 542. So this is with reference to 542. Proviso to Article 3. This is with reference. But the logic would equally apply. Proviso to Article 363. But the logic would equally apply to. and your proviso argument to is that 357(1)(a) and your argument is that 357(1)(a) the power of the legislature provides for Parliament to confer the President the power of the which you legislature discharge under the proviso to Article 3 is not the function which you discharge under the proviso to Article 3 is not the power to make law. So therefore, it can't get the president can't take over that. So therefore, it can't get the president can't take over that. 1351. Volume, just give us the 1351. volume. 248 read with entry 97 this one contemplates. Articles 248 read with entry 97 this one contemplates
If the amendment of the constitution were such a legislative process, if the amendment of the constitution were such a legislative process of states, the What is the provision PDF page? ratification PDF by the page? legislature of states. 542. What is the Not PDF like page? PDF page? 542. Yes. Article 248 read with Yes. 1897 this one contemplates Article 248 read with 1897 the amendment of the constitution were such a legislative process. If the amendment of the provisions regarding ratification by the legislature of not less than the provisions regarding ratification by the legislature of not less the constitution would be meaningless because there is no question the constitution would be meaningless because there is no question of the powers of the legislation by the parliament in exercise of the powers conferred by it is noteworthy that the ratification is by means of a resolution by the state legislature. That the ratification is by means of a resolution by the state plainly be not considered the passing of a resolution can plainly be not considered the state governments also do not come into the picture for the state governments also do not come into the picture. So therefore, your lordship sees that everything that the legislature does. So therefore, your lordship is sees not that everything that the legislature law-making does process. Is not so therefore the law-making powers under the proviso. So therefore, never the be taken. powers therefore, under the Article proviso 356 would have proclamation never be taken. So Suspending therefore, those Article two provisos 356 which have no nexus suspending whatsoever those to two the object to be provisos achieved under which have no 356 nexus whatsoever clearly to the object collateral to be achieved under 356. clearly collateral. So now I come to Interpretation of come Article to 3 and 4. Interpretation of Article 3 and 4. So the reference I made to Article 355, but so the reference I made to Article 355, but some passage from Bomai I must show. Para PDF page 155. PDF page of volume 2. 155. Now kindly see what that para volume 2. Now kindly see what that para This is with reference to Article 355 on which I place reliance. This is with reference to the purpose of 356 on which I place reliance. Is to restore the purpose of 356 is to restore the state. Para 160. The crux of the question. Just 1 second, which page? Para are you reading? 160. The crux of the question. Just 1 second, which page are you reading? For which volume? The PDF page. 155. वन रील टू PDF सेव यू page. फ्रॉम ऑल द Which judgment एम्बैरेसमेंट is तो this? इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू इनके बारे में तीन चीजें Which जाननी judgment is चाहिए ये this? हेड ऑफ द स्टेट है इंडियन आर्म फोर्सेस Bomai. कमांडर इन चीफ है और Volume फर्स्ट सिटीजन ऑफ द 2. कंट्री है अब आते हैं इनके डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप Para धनखड़ 168. प्रेसिडेंट के बाद इंडिया में Para सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस 160. इनका है Para इसके बाद 160. प्राइम मिनिस्टर Government of, नरेंद्र मोदी ये Chair एग्जीक्यूटिव of हेड ऑफ द the स्टेट है और इसी I think एग्जीक्यूटिव पावर के government कारण of, प्राइम मिनिस्टर Chair को of रियल the हेड वहीं प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड कहा जाता है नेक्स्ट है इंडियन जुडिशरी की The crux of हाईएस्ट the रैंकिंग question ऑफिसर is- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ The crux इसके of बाद the आते question हैं is- लोकसभा के हाईएस्ट और प्रिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओम बिरला इसके बाद है पूरे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने वाली इलेक्शन कमीशन के हेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर राजीव कुमार नेक्स्ट है इंडिया के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को ऑडिट करती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू बस दो और बचे यूपीएससी के चेयरपर्सन है डॉक्टर मनोज सिंह और इंडिया की हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमण जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वन रील टू सेव यू फ्रॉम ऑल द एम्बैरेसमेंट तो इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू इनके बारे में तीन चीजें जाननी चाहिए ये हेड ऑफ द स्टेट है इंडियन आर्म फोर्सेस कमांडर इन चीफ है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री अब आते हैं इनके डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ प्रेसिडेंट right. So therefore, if the machinery has broken down, so To set therefore, it if right the means machinery has broken see down. that To the set state it right normalcy means is restored. to see that
the state normalcy. So therefore, Article 356 cannot be read in isolation. So therefore, Article 356 cannot be read in इंडिया में isolation. किसी को नहीं पता कि हमारे पास टोटल कितने लॉयर्स है, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एडवोकेट बनने के लिए सिर्फ वो ही ग्रेजुएट रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज की डिग्री हो। अब कौन सा कॉलेज रिकॉग्नाइज है, कौन सा नहीं, ये डिसाइड करने की पावर सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। दरअसल 2015 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पता चला था कि इंडिया में 30% से ज्यादा फेक एडवोकेट्स है। उन्होंने हर एक एडवोकेट को फिर से रजिस्टर करने बोला। 16 लाख में से सिर्फ 11 लाख लोग सामने आए वेरीफाई करने की। अभी फिलहाल इंडिया में 1500 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस है। 2019 में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अगले 3 साल के लिए हम किसी नए लॉ कॉलेज को परमिशन नहीं देंगे। ये फेक लॉयर्स की वजह से फेक कॉलेजेस खुल रहे हैं या फेक कॉलेजेस की वजह से फेक लॉयर्स हो रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझना थोड़ा मुश्किल है। आपको पता है 2015 में दिल्ली की लॉ मिनिस्टर के ऊपर भी फेक लॉ डिग्री का एलिगेशन लगा था। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है, बताना जरा। इंडिया में किसी को नहीं पता कि हमारे पास टोटल कितने लॉयर्स हैं, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एडवोकेट बनने के लिए सिर्फ वो ही ग्रेजुएट रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज की डिग्री हो। अब कौन सा कॉलेज रिकॉग्नाइज है, कौन सा नहीं, ये डिसाइड करने की पावर सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। दरअसल 2015 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पता चला था कि इंडिया में 30% से ज्यादा फेक एडवोकेट्स है। उन्होंने हर एक एडवोकेट को फिर से रजिस्टर करने बोला। 16 लाख में से सिर्फ 11 लाख लोग सामने आए वेरीफाई करने की। अभी फिलहाल इंडिया में 1500 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस है। 2019 में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अगले 3 साल के लिए हम किसी नए लॉ कॉलेज को परमिशन नहीं देंगे। ये फेक लॉयर्स की वजह से फेक कॉलेजेस खुल रहे हैं या फेक कॉलेजेस की वजह से फेक लॉयर्स हो रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझना थोड़ा मुश्किल है। आपको पता है 2015 में दिल्ली की लॉ मिनिस्टर के ऊपर भी फेक लॉ डिग्री का एलिगेशन लगा था। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है, बताना जरा। इंडिया में किसी को नहीं पता कि हमारे पास टोटल कितने लॉयर्स हैं, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एडवोकेट बनने के लिए सिर्फ वो ही ग्रेजुएट रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज की डिग्री हो। अब कौन सा कॉलेज रिकॉग्नाइज है, कौन सा नहीं, ये डिसाइड करने की पावर सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। दरअसल 2015 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पता चला था कि इंडिया में 30% से ज्यादा फेक एडवोकेट्स है। उन्होंने हर एक एडवोकेट को फिर से रजिस्टर करने बोला। 16 लाख में से सिर्फ 11 लाख लोग सामने आए वेरीफाई करने की। अभी फिलहाल इंडिया में 1500 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस है। 2019 में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अगले 3 साल के लिए हम किसी नए लॉ कॉलेज को परमिशन नहीं देंगे। ये फेक लॉयर्स की वजह से फेक कॉलेजेस खुल रहे हैं या फेक कॉलेजेस की वजह से फेक लॉयर्स हो रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझना थोड़ा मुश्किल है। आपको पता है 2015 में दिल्ली की लॉ मिनिस्टर के ऊपर भी फेक लॉ डिग्री का एलिगेशन लगा था। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है, बताना जरा। इंडिया में किसी को नहीं पता कि हमारे पास टोटल कितने लॉयर्स हैं, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एडवोकेट बनने के लिए सिर्फ वो ही ग्रेजुएट रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज की डिग्री हो। अब कौन सा कॉलेज रिकॉग्नाइज है, कौन सा नहीं, ये डिसाइड करने की पावर सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। दरअसल 2015 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पता चला था कि इंडिया में 30% से ज्यादा फेक एडवोकेट्स है। उन्होंने हर एक एडवोकेट को फिर से रजिस्टर करने बोला। 16 लाख में से सिर्फ 11 लाख लोग सामने आए वेरीफाई करने की। अभी फिलहाल इंडिया में 1500 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस है। 2019 में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अगले 3 साल के लिए हम किसी नए machinery having failed and therefore 356 exercise. A 356 exercise. So in this context, I invite your lordship's attention to. So in this context, I invite your lordship's attention in Gujarat Assembly case. Judgment in Gujarat Assembly case. Now if your lordships have a look at Article 356. If your lordships have a look at Article 356. There is no provision which says that what is the upper limit. There is no provision which says that what is the upper limit. How long you can do away without an elected government? How long you can do away without an elected government? Before your lordship in Gujarat, this question came up, and before your lordship in Gujarat has said 6 months, and your lordships have said 6 months. Just that judgment is in. I'll just say. Volume. That judgment is in 19. PDF page, volume 19, PDF page. Volume 19 page. Does it? Page, volume 19 page. Does it? Just see. Page, volume 19 page. 283. I'm just see. Page 283. Volume 283. Volume 18 page 283.
So kindly come to para 79 on PDF page. So kindly come to para 79 on PDF page. The PDF page. The PDF page. 283. Para 79. 283. However, we are of the view Para 79. that the employment of the word. However, we are of the expiration view occurring in section. that the employment of the words and expiration occurring in section respectively show that the election commission is required to take steps. respectively show that the election commission is required to take steps of the assembly or elections immediately on Although no expiration period has of the been provided of the for. assembly or Yet, resolution. there is Although another no indication period in has been section provided 14 for. and 15 of the Yet, representation of there the is people another indication that in the section election 14 process can be of the second representation motion of by people issuing of that the notification election prior to the process can expiry be of 6 6 months months of the by normal issuing term of of the House of the notification prior to People the or the expiry of 6 legislative months assembly. of the normal term Clause of the 1 House of the Article People 172 or the provides legislative assembly. that while promulgation Clause 1 of privileges Article is 172 operation, provides Parliament may that by while law promulgation extend of the duration of the emergency legislative operation operation, not exceeding by 1 year law at a extend time, the duration and of the this period legislature shall not in any case not exceeding exceed 1 1 year year at a of time. 6 months, And this after period the shall not in promulgation any case exceed promulgation beyond the has period of ceased to 6 operate. months. After Further the under promulgation Article 124 promulgation has and ceased to 1.3 operate. of Further The under life Article of an ordinance 124 promulgated either by the 1.3 of President or by the Governor. the in life case of an may be, ordinance is 6 promulgated months. either by the And President or by the repeated Governor in promulgation case of may be, ordinance after is 6 6 months has and been welcomed repeated promulgation by of this ordinance court. after 6 Again months under has Article been 109, welcomed 110 by this court. 111. Again And under analogous Article articles 109, of the State 110 Assembly. and 111. Money bill has to be And passed by analogous the House of articles the for the People State Assembly. or by the legislature. Money bill has to be passed by the House of the People or by the legislature. So the period of 6 months has been read by your lordships. So the period of 6 months. There is one more para by your lordships. Then there is one more para of, this was of Justice Khare. The same judgment. This was of Justice And, Khare. there is para 147 in the judgment of there Justice is Prasad. Para 147 in the judgment of Justice Prasad. PDF page 316. PDF So page this is the ratio. 316. So this is the ratio. Para 147. Almost Para 147. His Lordship has Echoed almost what Justice Khare has His written Lordship in the has 79 which I read. Echoed what Justice Khare has written in the. Now I come to Article 3 and 4. Now I come to kindly Article see the 3 and marginal 4. Heading. Now kindly see the marginal heading. ये बताना हम इंडियंस को प्रॉब्लम चाहे करप्शन से हो, गवर्नमेंट से हो या एक मोलेस्टर से हो, Formation सारे प्रोटेस्ट हम of जंतर new मंत्र states में क्यों करते हैं? and मैं बताऊं, alteration of क्योंकि हर formation स्टेट का होता है अपना of खुद का states ऑफिशियल of प्रोटेस्ट and साइट, alteration जैसे दिल्ली का of है जंतर areas मंतर, of मुंबई का the आजाद range मैदान, of बैंगलोर का states. फ्रीडम पार्क। क्यों दिया जाता है ये सब? This is क्योंकि the clue. इंडियंस के पास होता है राइट टू डू Of course, there is पीसफुल a प्रोटेस्ट, debate पर बहुत सालों से ना whether इस राइट को marginal सिस्टमैटिकली reading can be कर्टेल seen. करने Of की course, there is a कोशिश की debate जा रही है। जैसे कि whether फेमस marginal जगहों की reading can जगह be seen. छोटे Fortunately for सेक्लूडेड us, एरियाज को प्रोटेस्ट एरियाज But डिक्लेयर this किया जा रहा है issue ताकि is जब यहाँ पे working प्रोटेस्ट no हो longer तो restricting नॉर्मल us. व्यवस्था, लोगों को This डिस्टर्बेंस issue नहीं होनी चाहिए। is पर मुझे ये then बताना no longer कि प्रोटेस्ट restricting करने का the मकसद ये नहीं constitution होता कि based ज्यादा से judgment of ज्यादा this लोगों को court. हम अवेयर करें, वहां तक अपनी In आवाज पहुंचाएं। constitution नहीं, based अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जंतर मंतर से पहले बोट क्लब जो राजपथ में, वो था हमारा ऑफिशियल प्रोटेस्ट साइट, पर क्योंकि वो पीएम ऑफिस और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास था तो अनसेफ मानते हुए जंतर मंतर को डिक्लेयर किया गया ऑफिशियल प्रोटेस्ट साइट। अच्छी बात यह है कि जंतर मंतर पार्लियामेंट के ज्यादा पास है, तो बात ज्यादा जल्दी पहुंचती है। अब कुछ सवाल आपके लिए, आपकी स्टेट का ऑफिशियल प्रोटेस्ट साइट क्या है? क्या आप वहां कभी गए? ये बताना हम इंडियंस को प्रॉब्लम चाहे करप्शन से हो, गवर्नमेंट से हो या एक मोलेस्टर से हो, सारे प्रोटेस्ट हम जंतर मंतर में क्यों करते हैं? मैं बताऊं, क्योंकि हर स्टेट का होता है अपना खुद का ऑफिशियल प्रोटेस्ट साइट, जैसे दिल्ली का है जंतर मंतर, मुंबई का आजाद मैदान, बैंगलोर का फ्रीडम पार्क। क्यों दिया जाता है ये सब? क्योंकि इंडियंस के पास होता है राइट टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट, पर बहुत सालों से ना इस राइट को सिस्टमैटिकली कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि फेमस जगहों की जगह छोटे सेक्लूडेड And there is, According in my to me, there is respectful not submission, even ambiguity. There is a conscious. According to me, omission there is not even ambiguity. in There is a Article 3 conscious omission as regards power in to Article abolish a 3 state. As regards power to abolish a state. Conscious omission. Conscious omission.
So why do I say there is a conscious omission? Not So only why do I from say the there is a conscious omission? Marginal heading. not only from the, but also look at the text. Marginal heading. But also look at the text. Form a new state. Form By a new separation state of territory from any state, by separation or of by territory uniting two from or any more state state, or parts or of the by state, uniting or by two or uniting more the states, territory to a or part parts of the state, or by uniting the territory to a part of minute the details, what that power is. Minute details, what that power is. Then it further says, then increase the area of It further says, increase the area of any state. Alter the boundaries of any area of any state. Alter the name of any state. Alter the boundaries of any state. Alter the name of any details are given. What is the extent of that power? Details are given. What is the extent of that power? There is no ambiguity at all. There is not even a whisper about abolishing the state. There is not even a whisper about abolishing the state. And this has to be seen in the light of Article 1. India that is Bharat shall be in the light of Article 1. India that is Bharat shall be a union of states. Two also. The Parliament may by law admit into union. The Parliament may by law admit into union on such terms and conditions as it thinks, or establish new states. So Article 1 and conditions as India that is Bharat is the union. So Article 1. Article India 2 that is Bharat of the union of states. Article 3 Article 2 give admission of new states of Article 3 the power तो जितने भी लोग ये कह रहे थे कि भारत से डेमोक्रेसी खत्म हो गई, the power that therefore there is a conscious omission to abolish a state. Now therefore there is a conscious omission to my second point. What happens when you unite two states? My second point, but the What point is happens when this. you unite Your two lordship will states? see. But the point is this. That's Your a lordship will territory. see. What is the idea behind the state? That's a territory. That people in a given idea behind the state should have. That people in a given territory should have a state two-tier democracy. At the state level, two-tier democracy. And that is how the constitutional at the state level, some powers are given to the state. That is how the constitutional scheme is. Some they have their own government, the state, list two. So they have their own government of a state. So this is inbuilt of a state, in a democratic structure that this constitution has built. Inbuilt in a democratic structure that this constitution has built. In other words, the existence of states is a part of the basic In other structure. Words, the existence of states is a part and of the basic can't structure. Be an exception to it. And J&K can't be an exception. Then why not tomorrow abolish Bengal? Then why not tomorrow abolish By what Bengal? Parameter? By what parameter?
that according to me there is a conscious omission. So That Article according to me 1, there is a 2, conscious 3 omission. have to be read together. So Article 1, 2, Now, 3 there have is to be one read more together. reason. Now, There this is one more reason. alteration of boundaries, changing the name of the This state, alteration of boundaries, one changing state the being name of the divided state, into uniting number two of states. states, one state being divided. This does not into amount to an amendment of number the of states. Constitution. This does not amount to an amendment of the True. Constitution. So all the more reason True. why this power must be So all the more narrowly reason construed. Why this power must be narrowly construed. According to me, no two interpretations are possible. There is a conscious omission. According to me, no two interpretations are possible. India there is a conscious omission to abolish a state because India is the union of states. I link it with 355 and 356. I link it with 355. Article 3 has to be read with 355. If there is breakdown of Article 3 has to be read with 355. If there is breakdown of, you can't abolish a state. The normalcy. But you can't abolish a state. And since it does not amount to a constitutional amendment, it must be strictly it does not amount to a constitutional amendment, it must be strictly and narrowly interpretation. In my respectful submission, And would this advance interpretation, the concept of democracy and concept of advance the concept of democracy and concept of federalism. open the Article 18, Article 18, Article 18, Article 18. Of my argument, of my, Now forget everything. argument. What is the impact? Now forget everything On the What is the constitutional impact? structure? On the constitutional Where structure. everything has been turned upside down. Where everything has been turned upside down. First, what is the impact? First, Ladakh what is the under impact? the reorganization has no representative Ladakh in the under Rajya the Sabha. reorganization Has no representative in the Rajya Sabha. People of Ladakh therefore do not count as far as people of Ladakh therefore Rajya do Sabha not is count concerned. as far as Rajya so much Sabha for is the concerned. democracy. So much Now look for at the Lok democracy. Sabha. Now look at Lok Sabha. All existing Rajya Sabha. All existing four seats in Rajya Sabha. Rajya Sabha. J&K. All existing four seats in Ladakh is Rajya left Sabha out. Go to J&K. Ladakh is left out. Consequently, people of Ladakh have nothing to do with working of Rajya Sabha, Consequently, people of including Ladakh the have election nothing of to the do with deputy chairman working under of Article Rajya Sabha, 1989, including the and election of the deputy chairman under Article 1989. Second, look at Lok Sabha. Under Article Second, 81C. look at Lok Sabha. Under Article 81C. All union territories in the country can maximum have 20 seats. All union territories in the country can maximum have 20 seats. In that, you have the J&K. But look at the discrimination. But look Under at Article the 81 clause 2. Under As far as Article other 81 states are clause concerned, 2, as far as the other number of states are seats that concerned, they have depends upon their population. the number of seats that they have depends upon their population. And the Constitution further mandates that this ratio between the population and the seats for all the states ratio between the population as far as practicable.
for all the states shall be same. So in state of Jammu and Kashmir, irrespective of its population. So in state of Jammu and Kashmir, irrespective of its population, it has no proportionate representation in the Lok Sabha. Discrimination. Article 14. Discrimination. Article 14. Now, if you create some more union territories, union territories, that limit of 20 will have to be crossed, including the 5. That's all right. Today it is 19, but including the 5. That's all right. Working out seats for other states is a different formula. Working out seats for other states is a different formula. How can this be done? Other disastrous consequences. Look at the election of the president. Other disastrous come to Article 54 and 55. Look at the election of the president. Come to Article 54 and 55. For electing the president, electorate consists of members of parliament, both Rajya Sabha, electorate consists of also members of parliament, both Rajya Sabha, Lok Sabha, members and also of respective states. The legislative members of now J&K is not a state. Now J&K is not a state. Therefore, there is no MLA for the purpose of president. Therefore, there is no MLA for the purpose of president selection. Now, to the exclusion of. Now to the exclusion, no say in the election of the big area, no say in the election of not by direct, at least by an indirect method. If not by direct, at least by an indirect method. But I must hasten to add that the Reorganization Act says. But I must hasten to add that the Reorganization Act says that Pondicherry under Article 54 and 53 there, and Pondicherry under this will require a constitutional amendment. You can't do it by law like this. This will require a constitutional amendment. You can't do it by law like this. Other disastrous consequences. Article 279A consequences. Representation in the GST Council. 279A. Representation in the GST Council. People of Jammu Kashmir Ladakh have no say as far as that council. People of Jammu Kashmir Ladakh have no say as far as that council is concerned. Appointment of High Court judges. Appointment of High Court judges. As far as other states are concerned. As far as other states are consulted. And the governor is one of the persons to get an advice. And governor means, so that also goes advice. There are several such provisions. So that also goes in the Constitution, which are there impacted. Are several such provisions in the Constitution. Therefore, by a very small act, which apparently looks constitutional, a very small act, which apparently looks constitutional. 272. That is constitutional. The whole constitutional structure is demolished. The whole constitutional structure is demolished. Substantially restructured. With J&K. So I'm grateful that Thank you, Mr. I exceeded my time. No, Mr. So I'm Thank you very grateful much. that Thank you, Mr. I exceeded my time. Both Thank you Mr. very much. Dave and everybody has argued. Thank you, Mr. And Dave. both Mr. Dave and everybody has argued. Contemplated must be that consultation elected. That point has been extensively argued. That is by elected. That's sorry that I point has been extensively argued. I thought that's sorry that I exceeded my word. Perhaps I was justified. I'm grateful. Perhaps I was justified. I'm grateful. Somebody's time will have to get deducted. Ultimately, Somebody's time will have to get deducted. 50 over the time. Ultimately, whether it's 20 over 50 over the time is allocated to everyone between whatever is available. How much somebody can bet will depend on the total number of hours. It reminds me of my position that this point of time is like that of a night watchman. Me of my position that this point of time is like. No, you're just after tea actually, so you have a whole session. No, you're just after tea actually, so you have a whole session. You can resume. Which is a very delicate job, night watchman. No? He has to sustain the flagging interest also. Night watchman. He has to sustain the flagging interest also. But I have submissions on two issues. I have one submissions on two issues. Mr. Nafde was advocating this. One was regarding what demolition of a state advocating this union territory regarding demolition of a state. The only thing I wish to add on what he said was. And only thing I wish to add on what he said was.
Lordship would just have a look at Which matter 246.4. are you appearing, Mr. Dwivedi? Which matter are you appearing, Mr. Dwivedi? In the first matter, we filed a petition, but we were told to file a first intervention application. We filed a petition, an order was passed to file a intervention application, like any other. Then an order was passed on that. So you are for an intervener? We will be heard like any other. Which just give us the, so you are for an intervener? There's a reference to which just give us the, for the sake of the record, we need to. There's a reference to that. Lord, it is for the sake of the petition record, number, it is IA number, it is 145, it is IA IA number? number. Sorry, can you come again, please? 145, IA number IA number? 145. Sorry, can you come again, please? IA number 145. Yes. Dash 53 2019. This Yes. is in petition civil number. This is in 1013 civil number of 2019. 1013 of 2019. Actually, I think forgot to
overruling, Lord, inevitably implies that the past practice, whether right or wrong, it will continue to operate. That the past practice, whether right or wrong, it will continue to operate. But it accepts the fact that if the declaration is made, but it accepts the fact that the declaration is made of invalidity of that may have a consequence. Therefore, Lordship's prospectively overruling. That may have a consequence. So implicit in this prospectively overruling is the invalidity of those. Implicit in this prospective overruling is the invalidity of those. Suppose therefore, another way of looking at it is, Lord, look at it this way. Another way of supposing Lordships accept by this one. Supposing Lordships accept my viewpoint on the basis of the text and the context. Accept my viewpoint on the basis of the text and the conclusion. That yes, Lordships come to the conclusion that the power is not available. That yes, and therefore the impugned the power is not available. COs are, and therefore the impugned COs are invalid. Now, in order to prevent the effect from traversing on to the earlier ones, Lordship 142, whatever relief Lordships can. But that doesn't mean that on the basis of this past. But that doesn't mean that continued exercise of power. Past, Lordships will ignore the continued exercise of power and the context. Lordships will ignore the text and the context. As per my submission, inevitably show. Context that yes, the power could not have survived inevitably show that yes, the power could not have survived. There is a case. TubeBuddy helps your YouTube videos get seen. Sure wish it could also help me find my TV remote. Now add on to what has been argued. तो चंद्रयान 3 अब से थोड़ी ही देर के have to add on to what has been argued. पर लैंडिंग होगी हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास 3:35, so you can maybe in 5 or 10 minutes conclude the first point. Additionally, if you Lordship would just have a look at 246.4. Additionally, if you Lordship would just have a look at बने हुए हैं। श्रीनिवास, जो आप बात बता रहे थे कि 30 किलोमीटर के बाद टेरर टाइम शुरू हो जाता है क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करना है और सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, लेकिन क्या माना जाए कि ये जो प्रपोल्शन को अलग करने की प्रक्रिया है ये भी उतनी ही जटिल है? हालांकि पिछली बार इसमें हम सफल रहे थे, लेकिन क्या ये भी जटिल प्रक्रिया होती है? अब देखिए, जहां तक प्रपोल्शन मॉड्यूल के अलग होने की प्रक्रिया है, ये कोई बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया खास करके हमारे इसरो साइंटिस्ट के लिए नहीं है। हम आपको बता दें कि जिस दिन से चंद्रयान लॉन्च होता है, जब पहली लॉन्चिंग होती है 14 तारीख को, उसके ठीक 16 मिनट के बाद से ही legislature, Lord. Now, when Parliament becomes the sole state comes out of the legislature, Lord, they inevitably, Lord, the state comes out of the Lordships have said, Article 1, and my friend, Lordships have said, Lord, I can Article 1, and my friend, Article 1 says India is a union of state. Article 1 says India is a union of state, and refers to Schedule 1. I feel Lordship would just have Schedule 1 for a moment. Now, Schedule 1, Lord, specifies the states in Article 1 and 4. Schedule 1, Lord, specifies the states in Article 1 and 4. Per schedule. It specifies the states, and Kashmir is there. It specifies the states. At item 15. And Kashmir is there. And then, Lord, it goes on to have item 15. Item 2. And then, Lord, it goes on to have item 2, union territories. Lordship would have not 28 states, then item 2, union territories. Though they are part of territory of India, as per Article 1. Though they are part of territory of India, when it comes to federal structure, Lord, unit territories are not part of that. When it comes to federal structure, Lord, unit territories are not part of that. I have referred to in my judgment that this is not to that effect, Lord. Article 1 does not to that effect. Contemplate Article 1 does not constituting part of federal contemplate and for obvious reason, Lord, Constitution would recall the definition of federal structure. Constitution would recall by Dr. Ambedkar the definition of federal structure. He said there has to be a dual polity given by Dr. Ambedkar. He said there has to be a dual polity. Not declined the entire objections, and that is how he not declined the entire objections as being unitary. And not being federal. Constitution of India as being unitary,
Now there is a nuance on that following the NCT judgment. Now there is a nuance on that following the NCT judgment. We have placed Delhi in a different. It goes further. Is that what your lordship has said goes further. Dual polity contemplates that citizen of every state is entitled to be governed by the laws made by two different legislatures. To be governed by the laws made by two different legislatures. Where for local issues the right is for the local to get himself. Where for local issues the right is for the local to get himself governed by the local. And so far as the national issues are bigger issues. And so far as the national issues that right gets defeated. Parliament. And therefore the dual polity gets defeated as per Lordship's judgment. And therefore the dual polity gets lost as per Lordship's satellites of the states are not appendages as Lordship said. They are their own plenary selves created under the Constitution. They are their own plenary selves created under the Constitution, not the Parliament. So this results in the demolition of the entire dual polity. So this results in the demolition of the entire dual polity. And no one can say about the destruction of the federal Jammu and Kashmir. And no one can say about the federal structure. Jammu and Kashmir. Our federal structure is not defined. But there's an interesting aspect which I wanted to. Our federal structure is not defined. But there's an interesting aspect which I wanted to bring to Lordship's notice in this regard. Lord, all throughout. We have been hearing about the quasi-federal character and so on and so forth. We have been hearing about the quasi-federal character and so on and so forth. It's not truly federal. But in each of these judgments, which say so, what your lordship would see in each of these judgments to notice say so, what your lordship would see is they omit to notice. And when we come to Constitution of Jammu and Kashmir, it goes one step. And when we come to Constitution of Jammu and Kashmir, it goes one step ahead. It is the Constitution of Jammu and Kashmir in our federal structure. It is the which lays down the parliamentary jurisdiction in our federal structure, which lays down the parliamentary jurisdiction. It lays down the parliamentary jurisdiction under the commitment given by the parliamentary jurisdiction under the commitment given by the framers of the Constitution and the dominion of India. It lays down the tone and terror of the blood. It lays down the fate and tone and terror of the blood. Finally, fate and the union relations. Have said. Finally, that's what the and then have a look at Section 5. Because if we don't accept this, and then have a look at Section 5. Section 5 because if we don't accept this, the soul and heart of then Section 5 becomes the according to me the soul and heart of the JK Constitution. That's the basic structure of demolished. That's the basic structure of and Section 5 says the power of state and Section 5 says the power of not on any subject which is given to the not on any subject. Parliament has been given enumerated powers. That is entry 1 to 96. Parliament has been given enumerated powers. That is entry 1 to 97 and Article 240. And not 97. Which means residuary entry is not there. Rest of the entries 1 to 96 which means residuary entry is not there. Rest of the entries 1 to 96 are there with Parliament. Under the Constitution of Jain. The concurrent list and the state list are with the concurrent list state and the state list are with the extent that correspond to the except to the extent that correspond to the instrument of accession. Now can you look at this note? Here is a case where the state is going to decide what is the here is a case where the state is going to decide what is the jurisdiction of Parliament and what is that's the extent to which the autonomy was given to Jain. So that's the extent to which the autonomy was given to Jain. Dr. Rajiv Dhawan's guaranteed autonomy. And to borrow democratization of power in India in the shape of autonomy. Democratization of power in India. He referred to various provisions of various levels of autonomy was given. He referred to various case where the level of autonomy was given. Now here is the case where the level of autonomy is. But nevertheless, it is part of federal structure. We can't deny because Article 1. But nevertheless, it is part of schedule structure. We can't deny because Article 1 and the schedule say so. But by reducing that state into a union territory, what we are doing is we are bringing it under 246(4). What we are doing is we are bringing it under 246(4). The people of the state, both the states, both the union territories now will have only one legislature. Both the states, both the union territories now will have only one legislature. Both the right to be governed under a dual polity.
The right to be governed under a dual polity goes for a toss. And that is how we'll have to see Section 3, Article 3, I'm sorry. And that is how we'll have to see Section 3. Berubari gives a clear indication. I'll show that passage. Berubari gives a clear indication. That is how we'll have to see that power is limited. We can't, the amendments that have come is only for a specific object. The amendments that have come is only by adding the explanations. And the object amendment in the, by adding the explanations have come for a specific object of overruling the Berubari case. They have come for a specific object of overruling the Berubari case. Union territory to the extent it said. So to that extent, the Union territory is not governed. Any part of Berubari judgment, to that extent, the states cannot be. They don't have a territorial integrity. It says that states cannot be. But they don't have a territorial integrity. They can be addition to the state, but then they can be subtraction from the state by addition to the state. They can that be subtraction from the state by giving it to another state. That way, what you are conferring is the dual polity. Whenever you change the territory of the state, the dual polity for the citizens. You are retaining the dual polity for the citizens. Where the dual polity continues from this state, they go to another state. But then by demolishing it, what we are doing is the reducing. But then by demolishing the dual polity, what we are doing is the unitary system and demolishing the dual polity into a unitary system under that 46. This is what I wanted to add to my friends. This is what I wanted to add to my friends. And I have in my written submissions. And I have in my written submissions, this federal structure cannot be disturbed. Given the host of cases where lordships have said, this federal structure cannot be disturbed. This is my written submissions. This is my written submission, lordships, to see page 44. This is I would 45 in that regard. See page 44 and 45 in that regard. This is at page, as my friend corrects me. I have given the internal this is at page, as my friend corrects me. I have given the internal page. PDF page. PDF page. Written submission what? What is the PDF page? Written submission what? What is the PDF page? The internal page is 44 and 45. The internal page is 44 and 45. So therefore, I submit with respect Article 1 completely excludes. Therefore, I submit with respect Article 1 completely excludes. And therefore, once you reduce the state to a union territory, you deprive me of my right to be governed by the state to a union territory. You deprive me of my right to be governed by the crux of the dual polity. That's the crux of the dual polity. Internal page 44 of the Act, at page 437 of the Act, at page 437 of the Act. 437. 437. And I'm only referring to page 44 to 46. And I'm only referring to page 44 to 46. And I've referred to host of judgments. But basically, lordships are clearly referring to two last judgments. Basically, at page 46, two last judgments at page 46, wrote the Chief Justice of the partner. Two last judgments, 2017, of which wrote the Chief Justice of the partner. 2017, 12, and then 2018, volume 8, SCC 501. And I have given and then 2018, volume 8, SCC 501. And I have given the paragraphs too. 2018, volume 8, SCC 501. And I've given the paragraphs also in the SCC 501 in the PDF. And I've given the paragraphs also in the PDF. Yes. And then there is another page, Lordship may have, no? 46 and then 47. There is another page, Lordship may have, no? Yes. 46 and 47. Internal page. Yes. That is what I wish to add, no? That is what I wish to add, no? Now, before I proceed, Lord, there were two issues. Before I proceed, Lord, there were two issues in the very beginning for anchoring Lordship's mind, Lord. One was in the very beginning of the Lordships, and one from Lord Justice. One was, in fact, two from her Lordships. And Lordship had an issue with regard to sovereignty. Lordship had an issue with regard to sovereignty. And the observation was that once you exceed,
You surrender all your sovereignty to the Union Dominion of India. You surrender all your sovereignty. Lots of things have been instrument of accession would not amount to surrender unless there is a merger agreement. It says that amount to surrender unless there is a merger agreement. As happened in the case of other states, not your sovereignty. As happened in the case, other states had not only not acceded. Other states had not only not acceded before 15th of August. They had signed as a precondition. They had signed as a precondition, signed the standstill agreement by the Dominion of India, which covers the matters of the standstill agreement also, which covers the matters. And after that, Lord, they acceded to the Union. And after that, Lord, they thereafter, Lord, the Union of India. They further when they merged with the thereafter, Lord. They further, when they merged with the adjoining provinces, automatically merged the adjoining provinces under the government of India. Provinces, they automatically merged provinces under the Indian states merged, they automatically provinces. Or they Indian states merged primarily with the provinces. Then they were directly or they formed their own federation. They never directly administered, signed the merger agreements. They all not signing all their powers of legislation. And that is why your lordship would say all their powers of legislation. Article 238. And that is why your lordship would say Article 238 was in Article 238, Lord, expressly applied Part 6 and 238, Lord, expressly and applied Part 6 and 7. Which is 245, 246. And of course, consequently, Part 11, which is 245 to all the other Indian states. 254. But when it came to Jammu and Kashmir, all the other Indian states have noticed, not that. But when it came to Jammu and Kashmir, was one notice have 38 that in 370. This is despite the fact, Lord, 38 important is this is despite the fact. This is despite the fact, Lord, what is important is this is despite the fact that the Part B state. Kashmir was placed as a Part B state in the schedule. That point of time when the Constitution was enacted. In the schedule. That point of time when the Constitution was enacted. Now the new point, it's about 10. Now the new point, it's about 10. Roughly how long would you take? Because we are starting the new point the second. Roughly how long would you take? Not within an hour. Because we are starting the new point the second. Try to, not within an hour. Because we'd like to conclude the submissions on this side on, because we'd like to conclude the submissions on this side on Tuesday. We'd like to put it to the other side and get so much of responses. I think we'd like to put it to the other side and get responses. His friends are on different issues. My situation is very different. If you could really put down say about half an hour, if you could really push through on Tuesday and in say about half an hour, Mr. Dwivedi, who will be arguing on Tuesday, and Mr. Singh about half an hour, or less, who will be arguing? Mr. Singh about half an hour or less. You've prepared your written submission. You've made your written submission. So what we'll do is on Tuesday, frankly, I have not seen the submissions over the weekend. What we'll do is look at your written submissions so that then you know your time is then. We'll look at your written submissions so that then you know your time is then because we'll be completely ready with your background. I'll cut it down to half an hour, Mr. Singh. Otherwise, you know, we'll not finish this side on now. I'll cut it down to half an hour, Mr. Singh. Otherwise, you know, we'll not finish this side on now. See, Mr. Now, Gopal Shankarayan has been sitting all this time. Gopal Shankarayan has been sitting. He must now decide who is speaking and how long they are speaking. Because the bulletin will apply on Tuesday, certainly. Who is speaking and how long they are speaking. Because the bulletin will apply on Tuesday. अभी हाईवे वाला मोड अरे मेरा किराया कुत्तों के चेज वाला मोड a wide range of tires जो दे हर मोड़ पे confidence TVS Eurogrip tires for a country full of turns. मॉड्यूल को अभी तक इसरो ने टेस्ट करते रह रहा है वो लैंडर मॉड्यूल का इंस्ट्रूमेंट्स गैजेट्स एंड इंजन्स ठीक से काम कर रहा है करके इसरो को एक क्लियर है तो ये एक बात इससे हमको साबित हो रहा है। सेकंड ये क्या होगा ये सेपरेशन होने के बाद ये लैंडर मॉड्यूल अपनी आप पैर में खड़ा हुआ तो उसके लिए उसके पास क्षमता है वो इसरो तैयार कर दिया इससे क्लियर हो रहा है ये पहली बात है। सेकंड बात है आज ये सेपरेशन कर दिया तो
Next, I think what we'll do is, I think what we'll do is, we'll go through the written submissions of what we'll do is we'll go through the written submissions of Mr. Dwivedi and possibly Dr. Guruswamy and Mr. Shankaran. Any particular aspect of the submission that you would like us to focus on, because now you'll be covering things which are left out by the others. Focus on, because now you'll be covering things which are left out by the others. If I can just make one small, there's hardly been any repetition or overlap this side, despite the amount of time that's been taken. And the reason I'll explain why. On day one, I told your lordship and the reason I'll explain why. Your lordships have been shown only, I think, about 10 or 5 pages, less than 5%. Your lordships have been shown only, I think, about the rest of it, I'm less than 5% of the documents go through. What we are doing, personally, I tell you what lordship may have to go through. Putting down what we are doing, personally, I tell you what on your own, because I'm going to putting down what I would like your lordships to read on your own, because it's going to take. There are in fact large swaths of material that needs to be shown. We don't have the time. Can I suggest material that needs to without be shown. giving us We no don't like have a the time. million pages? Can I suggest one? If you can say without giving us no like a million pages, give to the court master on a piece of paper tomorrow afternoon. What are the specific aspects you would like us to paper from your submission? What are the specific aspects you would like Dwivedi has given us? From your just highlight that. I'll circulate it to all my Dwivedi has given us. So that just highlight exactly what circulate to all my four colleagues. So we'll be also ready over the weekend. Exactly what 2 days the area you're focusing on. So we'll be also ready over the weekend. We have those 2 days apart from the Monday reading. So we'll get through with the submission so that will curtail ultimately the get through with the submission so that will curtail ultimately. We proceed on the basis then that which all of you are Dwivedi. So we proceed on the basis then that Mr. Gopal Shankar Narayan and Dr. Menka will Chandra Singh, Mr. Gopal Shankar Narayan and Dr. Menka will conclude. All right, you tell us. No, all right, you tell us what is the sequence now. All right, you tell us. No, all right, you tell us what is the sequence now. No, it's. Correct, the sequence can be, that is why I said Mr. Gopal Shankarayan can put down, you have so many minutes. Can be, that is why I said Mr. Gopal Shankarayan, how much minutes will each of you take? So that it should not be that anybody, how much minutes will each of you take? By the end of the time. So that it should not be that anybody. Mr. Shankar Narayan, what you can do is, by the end of we are concluding this side completely on Tuesday. What you can do is, we are concluding whoever is in the court on Tuesday. You give us, please sit with whoever is in the court, the sequence, give us an allocation of time so that we, the sequence, strictly allocation of time so that we conclude on strictly stick to the time and we conclude on Tuesday at 4. There to be any allegation that I favor. No, not at all. I don't think anybody will do that. You've been there sitting there and no, not at all. I don't think anybody will do that. You've been there sitting there and you've been making notes and assisting everyone. Tuesday morning. But now when your turn comes, so that but give us that ideally give it to us tomorrow morning. So that in fact if you can ideally give it to us tomorrow morning, I'll circulate it to all my colleagues. So we know Tuesday morning, and we are then we keep to that order. So we know Tuesday morning and the time, and we are then we keep to that order. They have the sequence and the time. So there's no difficulty. Absolutely they have no difficulty at all. Just no difficulty. Absolutely you can no difficulty the interveners who are the interveners. You can between mention the interveners who are the interveners. No difficulty, no difficulty. You can just right now sit with Mr. Shankar Narayan for 5 minutes after we rise. Right now, so that he can just prepare the for 5 minutes after we rise. So that he can just prepare the blueprint for us. One thing, this is a little bit of self-restraint. We'll give 10 minutes, but 10 minutes provided you are saying something which is different from what somebody has argued. Provided you are saying something which is different from what somebody has argued. Then don't cover the same territory. We had that, we still have it, but now we are towards the almost the concluding stages we still have it, but now we are towards almost the concluding stages of the following. So thought we'll knows now everybody the time stipulated and so that following conclude on Tuesday. Knows this is otherwise what will happen is the last so that we 2 or 3 council will have very little time. Otherwise what will happen is the last 2 or 3 council will have very little time left. Like to ration out time for everybody, including the interveners. Mr. Shankaran, just do that. Kindly give it to Sanjay by tomorrow morning. Kindly give it to Sanjay by tomorrow morning. So he'll have it. Thank you.
1948 का चंद्रयान की आज पहली अग्नि परीक्षा। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो। धरती की 5वीं कक्षा में करेगा प्रवेश। हार रहा हो, यहाँ हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए। हम अगले हफ्ते से चांद का चक्कर। ये कोई भी आ सकता है, कोई भी आएगा। और ब्रेक के बाद आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और आइए अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। भारत के मिशन चंद्रयान की आज अगली परीक्षा है। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 मैन्यूवरिंग करके पृथ्वी की 5वीं और आखिरी कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी इस अहम पड़ाव के बाद चंद्रयान का अगला लक्ष्य चांद की कक्षा में प्रवेश करना होगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच IST-RAC यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक चंद्रयान की मैन्यूवरिंग को पूरा करवाएंगे। आज अगर सफलतापूर्वक चंद्रयान पृथ्वी की 5वीं कक्षा में पहुंच जाता है तो फिर 31 जुलाई से 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होने की उम्मीद है। जैसे मोहम्मद का चीफ है, तभी चांद की कक्षा में पहुंचकर इसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। हालांकि चांद की सतह तक पहुंचने के लिए भी चंद्रयान को 5 मैन्यूवरिंग करने होंगे। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। तो चंद्रयान 3 का आज अहम दिन। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। साहब अब ये बताइए, चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा टेस्ट, कामयाबी की उड़ान। आज चौथी छलांग, चांद के पास चला चंद्रयान। मिशन चंद्रयान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहा चंद्रयान 3 आज धरती की 5वीं कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान धरती की चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। हमें समझाया जाता है यानी आज चंद्रयान चौथी बार कक्षा बदलने जा रहा है। आपके लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर अब तक का सफर जानना जरूरी है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने बड़ी छलांग लगाई और वो सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में पहुंच गया। 16 जुलाई को चंद्रयान ने कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी के दूसरे ऑर्बिट में एंट्री ली थी। 18 जुलाई को चंद्रयान ने एक और पड़ाव पार करते हुए तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। तब चंद्रयान 3 51,400 किलोमीटर गुणा 228 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में मौजूद था। 20 जुलाई को चंद्रयान ने चांद की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी की चौथी कक्षा में एंट्री की। तब से ये 71,351 किलोमीटर गुणा 233 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। आज चंद्रयान की अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग यानी अगली कक्षा में प्रवेश होगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में आखिरी मैन्यूवरिंग करेगा। इस मैन्यूवरिंग को बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी IST-RAC के वैज्ञानिक अंजाम देंगे। अगर सब कुछ इसी तरह तक कार्यक्रम के मुताबिक चलता रहा तो चंद्रयान 3 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा और चांद की कक्षा में चक्कर काटने लगेगा। चंद्रयान कभी अर्थबाउंड ग्रेविटी ऑर्बिट से मून तक जाएगा। ये होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त विल बी द ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन गोइंग टू टेक प्लेस as per the nominal program. So we will have 4 earthbound maneuvers. After that it will have the lunar injection on 1 August. चांद की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को ठीक वैसी ही मैन्यूवरिंग करनी होगी जैसे वो पृथ्वी की कक्षा में कर रहा है। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए 5 मैन्यूवरिंग करनी होंगी, यानी कि 5 बार चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा बदलेगा। इसके बाद ही 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की संभावना है। पहला ही वक्त After that it will be captured और स्थान in moon, then it will become our propulsion module, lander module separation will happen on जिन्होंने 17th भारत August. के
विष तत्व को So हटा final power descent and landing is currently planned on 23rd August काशी at विश्वनाथ हो, 5:47 अयोध्या हो, केदारनाथ हो, Indian Standard रामेश्वरम Time हो, evening. So that is the यहाँ तक current कि आप में everything से goes बहुत से normal लोग को from पता today होगा to landing, उन्होंने that is the पेशावर में चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल जीर्णोद्धार 23 अगस्त को चांद की धरती पर उतरने की संभावना है और यही मिशन चंद्रयान का सबसे जोखिम भरा फेज है। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग यानी पूरे नियंत्रण के साथ सतह पर सुरक्षित उतरना। अगर दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान के लैंडर की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। ये लैंडिंग इसलिए भी खास है क्योंकि आज तक किसी देश ने मून मिशन की ये लैंडिंग नहीं की है। अब तक चांद पर मिशन भेज चुके 3 देश रूस, अमेरिका और चीन ने चांद के दूसरे हिस्सों में लैंडिंग की है। खुद ने सुधारा हाल है। We were trying to target a landing at a particular spot. आजादी एक सवाल है जिसे पूछता हर देश का so we face certain challenges. अगर चंद्रयान 3 के बजट की बात करें तो इसमें करीब 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान मिशन के 3 अहम लक्ष्य हैं। एक दूसरे के और दिल की सबसे चौखट अहम लानी लक्ष्य है चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा लक्ष्य चंद्रयान के रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है और अंतिम लक्ष्य चांद पर वैज्ञानिक परीक्षण करना है। हर बुरी आदत चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह एक लैंडर और एक रोवर मौजूद है। लैंडर यानी वो अंतरिक्षयान जिसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है और रोवर वो अंतरिक्षयान है जो चांद की सतह पर वॉक करेगा और उनका जवाब न बने। जैसे कि चंद्रयान चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और सवाल का जवाब बनता है यानी धरती के 14 दिन के बराबर समय में सक्रिय हो जाएंगे। सवाल का खुद जवाब बने और इस देश का सच्चा लाल बने। डाबर रेड पेस्ट की आजादी भरा सलाम। See, Chandrayaan 2 was hugely very good until its last phase of its landing, where we could not achieve the soft landing. It landed with a higher velocity, so that we call it as crash landing. So if you look at the overall scheme of things, of reaching up to the moon, I think we have perfected it already. We have done it one time in Chandrayaan 1, second time in Chandrayaan 2, also did it in Mars orbiter mission, so there is no ambiguity. चांद पर किसी भी अंतरिक्षयान की 2 तरीके से ही लैंडिंग हो सकती है। एक तरीका है सॉफ्ट लैंडिंग जिसमें स्पेसक्राफ्ट की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर जाता है। लैंडिंग का दूसरा तरीका हार्ड लैंडिंग कहा जाता है जिसमें अंतरिक्षयान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। भारत के मिशन चंद्रयान पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दरअसल चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की उस सतह पर उतरने वाला है जिसके बारे में वैज्ञानिकों के पास अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। यानी भारत की कामयाबी दुनिया को चांद के बारे में नई जानकारियां देगा। इससे न सिर्फ चांद बल्कि दूसरे ग्रहों पर रिसर्च में मदद मिलेगी। आपके मन में ये भी सवाल उठना लाजमी है कि दूसरे देश जो कि अब तक चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं उन्हें आखिर चांद तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो चलिए उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। चांद पर सबसे पहला कदम अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 ने 21 जुलाई को रखा था। 16 जुलाई 1969 को इसे रवाना किया गया था और 5 दिन से कम वक्त में ही ये चांद पर पहुंच गया था। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। रूस का पहला अनमैन्ड मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। 2010 में चीन के स्पेसक्राफ्ट ने सिर्फ 4 दिन में चांद की दूरी तय कर ली थी, जबकि भारत के चंद्रयान को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के रास्ते पर भेज दे। चंद्रयान 3 दूसरे रास्तों से चांद की ओर जा रहा है। धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बर्न्स का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 की गति बढ़ाई जानी है। इंजन बर्न्स के जरिए चंद्रयान 3 को ऐसी ट्रैजेक्टरी पर डालने की कोशिश की जाएगी जो चांद की कक्षा से टकराती हो और फिर से चांद की कक्षा में छोड़ा जा सके।
इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ये रास्ता इसलिए चुना है क्योंकि इससे कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी काम चलाया जाता है। यानी ये उपाय थोड़ा ज्यादा समय लेने वाला जरूर है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 का अब तक का सफर कैसा रहा है। इसकी लॉन्चिंग हुई 14 जुलाई को, जबकि पहली कक्षा में ये 15 जुलाई को पहुंच गया। बिल्कुल, और दूसरी कक्षा तक ये 16 जुलाई को पहुंचा। उसके बाद 18 जुलाई को तीसरी कक्षा में चंद्रयान 3 ने प्रवेश किया। चौथी कक्षा 20 जुलाई में ये प्रवेश कर चुका है और 5वीं कक्षा में आज ये संभावित है कि प्रवेश कर सकता है और ये आज का दिन काफी अहम होगा चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 2 जो कि आखिरी आज चंद्रयान को सफलतापूर्वक अर्थ के 5वें ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बारे में इसरो ने 5 दिन पहले जानकारी दी थी। आज दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम सिलेक्ट किया गया था। देश के लोगों के लिए ये वक्त बिताना बहुत मुश्किल रहा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। ट्विटर पर इसरो और चंद्रयान ट्रेंड करते रहे और खबर मिलने के बाद इसरो को बधाई भी दी। चंद्रयान 3 के लिए आज पूरे 45 मिनट तक 140 करोड़ भारतीयों की सांसें रुकी रही। दोपहर 2 बजे से लोग टीवी से ट्विटर तक इसरो की खबर का इंतजार करते रहे। असल में चंद्रयान 3 के सबसे चैलेंजिंग मिशन में से एक पूरा हो रहा था और सबको इसरो से मिशन सक्सेसफुल होने के मैसेज का इंतजार था। दोपहर 2:45 पर इसरो ने ट्वीट करके चंद्रयान 3 की कामयाबी के बारे में बताया। इसरो ने जो तस्वीरें ट्वीट की हैं, उसमें चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों तरफ अंतिम ऑर्बिट में चक्कर लगाता दिख रहा है। यानी बिना किसी दिक्कत के यान अपनी सही कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा की तरफ जो प्रयाण है वो एकदम सीधा नहीं है। तो इसरो जो है ये काम करते हैं कि पहले अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में डालते हैं और वो उस कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो चंद्रयान 3 के मामले में 4 बार इस कक्षा को बढ़ाया जा चुका है और ये 5वीं और आखिरी बढ़त जो है आज संपन्न हुई है। दोपहर 2 बजे पृथ्वी की 5वीं कक्षा में ले जाने का काम शुरू हुआ। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिकों ने इसे अंजाम दिया। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते समय चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। मतलब 1 सेकंड में ये यान करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे चंद्रयान को पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक कंप्यूटर ने एक ऑर्बिट से दूसरे में शिफ्ट कर दिया और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आज दोपहर 3 बजे तक 5वीं कक्षा में पहुंचने का मिशन पूरा होना था, पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे 15 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दिया। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद से चंद्रयान 3 एक के बाद एक दूसरे चरण को पूरा करता जा रहा है और अब तक का सफर बिना किसी दिक्कत के पूरा हो चुका है। भारत के संविधान चंद्रयान 3 ने 15 जुलाई को पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पहली बार ऑर्बिट चेंज किया। 16 जुलाई को बिना किसी दिक्कत के इस यान ने दूसरी कक्षा में खुद को स्थापित किया। इसके 48 घंटे बाद 18 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन तीसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया। फिर 20 जुलाई को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चंद्रयान चौथी कक्षा में आ गया। फिर इसके 5 दिनों बाद आज इस यान ने 5वीं कक्षा में एंट्री कर ली। अगर सब कुछ इसी तरह कार्यक्रम के मुताबिक चलता रहा तो चंद्रयान 3 31 और 1 अगस्त की मध्यरात्रि के करीब पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा और चांद की कक्षा में चक्कर काटने लगेगा। 75 वर्षों को देखें चंद्रयान कभी और इन्हें 25 वर्ष के ऑर्बिट से मून तक जाएगा। ये होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त विल बी द ट्रांसलुनर इंजेक्शन गोइंग टू टेक प्लेस सामाजिक और एज पर द नॉमिनल प्रोग्राम। धरती की कक्षा से चंद्रमा की तरफ रवाना होना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है।
अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो चंद्रयान चंद्रमा की तरफ जाने के बजाय किसी और दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ऐसी मुश्किलों का मुकाबला अपने आप कर सकता है। जब भी कोई ऐसा यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसमें प्लान ए, प्लान बी और कई बार तो प्लान सी और डी भी मौजूद होता है। यानी कोई यान किसी वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो बचने के लिए दूसरा बैकअप प्लान हमेशा मौजूद होता है। चंद्रयान एक के बाद एक दूसरा मील का पत्थर पार कर रहा है और इसकी वजह है हमारे वैज्ञानिक। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हो, इसरो के वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते और न ही मुश्किलों से घबराते हैं। आप देखिए कि पहली बार जो है इसरो जो है कोई भी कमी हो जाए, इस पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि ऐसी कोई भी कमी ना हो। तो इसके लिए चलक एयर्स में इसरो ने काफी हद तक लैंडर को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को ठीक उसी तरह से एक के बाद एक दूसरी कक्षा में जाना होगा जैसे वो अभी पृथ्वी के ऑर्बिट में कर रहा है। अब 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर अगले 6 दिन तक चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल होगा और फिर 13 दिन बाद चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इसके 40वें दिन चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान से लैंडर अलग होगा। इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा और 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा। आज चंद्रयान 3 को धरती की 5वीं कक्षा में शिफ्ट किया गया है और चांद की कक्षा में भी इस यान को 5 बार मैन्यूवरिंग करनी होगी। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 5 बार ऑर्बिट बदलेगा। विनम्रता से कहना चाहता हूं, लैंडर को मजबूत बनाया गया है, ये ज्यादा भारी है, इसमें ज्यादा फ्यूल है और लेकिन इसका डिजाइन और रोवर का डिजाइन पिछले लैंडर और रोवर की भांति ही है। तो उम्मीद की जाती है कि इस बार जो है उतार सफल होगी। चंद्रयान 3 करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके चंद्रमा तक पहुंचेगा। चंद्रयान का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। मतलब ये कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के रोवर के काम करने के लिए सूरज का निकला होना भी जरूरी है, तो सोलर पैनल से ही इस रोवर को ऊर्जा मिलेगी। करीब 40 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जब चांद पर कदम रखेगा तब भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। जो अपने उद्गम में प्रेरणा में पूर्णतः भारतीय। अब ये भी देखिए बहुत से चंद्रयान 3 की कामयाबियों को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं। पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ कैसर रशीद ने पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल की हेडिंग है कि पाकिस्तान का चंद्रयान कहां खो गया। पाकिस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब भारत का चंद्रयान रास्ते में है तो पाकिस्तान का चंद्रयान कहां है। इसकी वजह भी पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1961 में अपनी स्पेस एजेंसी सुपर को तो बनाई थी पर कभी स्पेस रिसर्च पर फोकस ही नहीं किया। और अब बात सब हैरान है कि भारत ने चंद्रयान 2 की लिमिटेड कामयाबी के बाद भी चंद्रयान 3 पर पैसा खर्च किया और वैज्ञानिकों पर भी भरोसा दिखाया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कैसर रशीद को लगता है कि भारत में इसरो को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया गया, एजुकेशन सिस्टम में सुधार किए गए और इस्लामाबाद ऐसा नहीं कर पाया। पाकिस्तान को अब समझ में आया है कि इसरो और आईआईटी जैसे संस्थानों की मदद से भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान अंतरिक्ष संघर्ष में बर्बाद हो गया। इसकी वजह भी पाकिस्तान को पता है। ये एक्सपर्ट आगे बताते हैं कि पाकिस्तान में कई ग्रुप्स हैं जो किसी भी चीज को धर्म के खिलाफ बता सकते हैं और तरक्की की राह में ये ग्रुप्स रोड़ा है। कैसर रशीद ने आगे बताया कि चीन की मदद के बाद भी पाकिस्तान को ना तो चंद्रयान दिख रहा है और ना भारत जैसा बड़ा आईटी सेक्टर। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि विजन ना होने से, आंतरिक लड़ाई और दुनिया की जरूरतों को नहीं समझ पाने की वजह से उनका चंद्रयान कहीं खो गया है। पाकिस्तान को पिछले 76 सालों में कई मौके मिले लेकिन हर बार इस्लामाबाद की कट्टरपंथी सरकार और पिछड़ी हुई सोच ने उनको 21वीं सदी में आगे बढ़ने के बदले कई सौ साल पीछे पहुंचा दिया। और जरा एनालाइज करते हैं कि क्या वजह रही कि जो सुपार को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है कम्स टू सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन पर्पसेस। और पाकिस्तान को अब भी अपनी हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए
अपने हर जो है इस किस्म के मिशन के लिए जिसमें सैटेलाइट की सर्विसेज दरकार हैं उसमें फॉरेन पावर्स पर रिलाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीटली सिक्योरिटी पर्पसेस में भी सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। हमेशा से सिक्योरिटी स्टेट को हमने एनफोर्स करने की कोशिश की, सिर्फ ये देखा कि दुनिया से अगर हमने जीतना है तो हमें मिलिट्री सक्सेस चाहिए, हमें उनके बॉर्डर्स पे हमले करने चाहिए या फिर अपने बॉर्डर को मजीद सिक्योर करना चाहिए। हालांकि बॉर्डर्स की जंग ही खत्म हो गई है, अब तो सिर्फ ये है कि सारे बॉर्डर पे फौज लगा के बैठे रहो। अगर पैसे नहीं है तो आपके मुल्क की सिक्योरिटी एक बड़ा परिवर्तन आया। आप देखिए स्वतंत्रता का अमृत 2022 चांद के और करीब चंद्रयान। राज्यसभा के उपसभापति और चाहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी स्वतंत्र भारत में पैदा। तो यह भी एक काल चक्र के एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है कि भारत एक लंबी छलांग मारने के लिए आगे तैयार है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम ये अगले 25 वर्ष में काम करें। देखिए चांद के और करीब चंद्रयान जो हमें आगे बढ़ना है। चंद्रयान की आज पहली अग्नि परीक्षा। धरती की 5वीं कक्षा में करेगा प्रवेश। 150 वर्ष श्री अरविंदो ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन से गुजर अगले रहा है। हफ्ते से चांद का चक्कर। और चक्कर काट रहा है। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 मैन्यूवरिंग करके पृथ्वी की 5वीं और आखिरी कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी इस अहम पड़ाव के बाद चंद्रयान का अगला लक्ष्य चांद की कक्षा में प्रवेश करना होगा। जो 21वीं सदी भारत की होगी इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में किस विचार की होगी यह संकेत भी 2011 के बाद के वैज्ञानिक चंद्रयान की मैन्यूवरिंग को पूरा करवाएंगे। आज अगर सफलतापूर्वक चंद्रयान पृथ्वी की 5वीं कक्षा में पहुंच जाता है तो फिर 31 जुलाई से 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होने की उम्मीद है। राज्य हमारा है, हमारे तभी चांद की कक्षा में पहुंचकर उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। हालांकि चांद की सतह तक पहुंचने के लिए भी चंद्रयान को 5 मैन्यूवरिंग करने होंगे। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। तो चंद्रयान 3 का आज अहम दिन। तो यह स्वराज नहीं हो सकता। ये स्वराज है क्या? तो उन्होंने क्या कहा? स्वराज की चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा टेस्ट, कामयाबी की उड़ान। आज चौथी छलांग, चांद के पास चला चंद्रयान। मिशन चंद्रयान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहा चंद्रयान 3 आज धरती की 5वीं कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान धरती की चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। यानी आज चंद्रयान चौथी बार कक्षा बदलने जा रहा है। आपके लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर अब तक का सफर जानना जरूरी है। सरकार बदलने के लिए नहीं। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने बड़ी छलांग लगाई और वो सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में पहुंच गया। 16 जुलाई को चंद्रयान ने कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी के दूसरे ऑर्बिट में एंट्री ली थी। 18 जुलाई को चंद्रयान ने एक और पड़ाव पार करते हुए तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। तब चंद्रयान 3 51,400 किलोमीटर गुणा 228 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में मौजूद था। 20 जुलाई को चंद्रयान ने चांद की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी की चौथी कक्षा में एंट्री की। तब से ये 71,351 किलोमीटर गुणा 233 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। आज चंद्रयान की अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग यानी अगली कक्षा में प्रवेश होगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में आखिरी मैन्यूवरिंग करेगा। इस मैन्यूवरिंग को बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी ISTRAC के वैज्ञानिक अंजाम देंगे। अगर सब कुछ इसी तरह तक कार्यक्रम के मुताबिक चलता रहा तो चंद्रयान 3
31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा और चांद की कक्षा में चक्कर काटने लगेगा। सबको देना। चंद्रयान कभी हर गांव में बिजली, हर घर में नल, मून तक जाएगा, ये होगा हर गांव में सड़क। 1 अगस्त will be the translunar injection going to take place. धारणा यदि प्रचलित ये भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके बावजूद हमने दिया। जिस वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते, उनके भी 70 चांद की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को ठीक वैसी ही मैन्यूवरिंग करनी होगी जैसे वो पृथ्वी की कक्षा में कर रहा है। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए 5 मैन्यूवरिंग करनी होंगी, यानी कि 5 बार चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा बदलेगा। इसके बाद ही 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की संभावना है। After that, it will be captured in moon. Then it will become propulsion module, lander module separation will happen on 17th of August. गति से बनाया, उनसे ज्यादा परिमाण में बनाया। Final power descent and landing is currently planned on 23rd August. दूसरी कैटेगरी वो काम होते हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा standard time evening. So that is the current, everything goes normal from today to landing, that is the schedule. चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चांद की धरती पर उतरने की संभावना है और यही मिशन चंद्रयान का सबसे जोखिम भरा फेज है। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग यानी पूरे नियंत्रण के साथ सतह पर सुरक्षित उतरना। अगर दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान के लैंडर की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। ये लैंडिंग इसलिए भी खास है क्योंकि आज तक किसी देश ने मून मिशन की ये लैंडिंग नहीं की है। अब तक चांद पर मिशन भेज चुके 3 देश रूस, अमेरिका और चीन ने चांद के दूसरे हिस्सों में लैंडिंग की है। We were trying to target a landing at a particular spot closer to the south pole, that is 70 degrees to the south pole. And in that doing so, we face certain challenges. तो देखिए पहला चरण ये था। अगर चंद्रयान 3 के बजट की बात करें तो इसमें करीब 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान मिशन के 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला और सबसे अहम लक्ष्य चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा लक्ष्य चंद्रयान के रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है और अंतिम लक्ष्य चांद पर वैज्ञानिक परीक्षण करना है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह एक लैंडर और एक रोवर मौजूद है। लैंडर यानी वो अंतरिक्ष यान जिसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है और रोवर वो अंतरिक्ष यान है जो चांद की सतह पर वॉक करेगा। जैसे कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर एक लूनर डे यानी धरती के 14 दिन के बराबर समय में सक्रिय हो जाएंगे। Wanted to know about the issues that we faced during Chandrayaan 2 and how we have circumvented or solved those issues in Chandrayaan 3. See, Chandrayaan 2 was hugely very good until its last phase of its landing, where we could not achieve the soft landing. It landed with a higher velocity, so that we call it as crash landing. So if you look at the overall scheme of things, of reaching up to the moon, I think we have perfected it already. We have done it one time in Chandrayaan 1, second time in Chandrayaan 2, also did it in Mars orbiter mission, so there is no ambiguity. चांद पर किसी भी अंतरिक्ष यान की 2 तरीके से ही लैंडिंग हो सकती है। एक तरीका है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें स्पेसक्राफ्ट की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर जाता है। लैंडिंग का दूसरा तरीका हार्ड लैंडिंग कहा जाता है, जिसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। भारत के मिशन चंद्रयान पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दरअसल चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की उस सतह पर उतरने वाला है जिसके बारे में वैज्ञानिकों के पास अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। यानी भारत की कामयाबी दुनिया को चांद के बारे में नई जानकारियां देगा। इससे न सिर्फ चांद बल्कि दूसरे ग्रहों पर रिसर्च में मदद मिलेगी। आपके मन में ये भी सवाल उठना लाजमी है कि दूसरे देश जो कि अब तक चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं, उन्हें आखिर चांद तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो चलिए उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं।
चांद पर सबसे पहला कदम अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 ने 21 जुलाई को रखा था। 16 जुलाई 1969 को इसे रवाना किया गया था और 5 दिन से कम वक्त में ही ये चांद पर पहुंच गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। रूस का पहला अनमैन्ड मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। 2010 में चीन के स्पेसक्राफ्ट ने सिर्फ 4 दिन में चांद की दूरी तय कर ली थी, जबकि भारत के चंद्रयान को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के रास्ते पर भेज दे। चंद्रयान 3 दूसरे रास्तों से चांद की ओर जा रहा है। धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बर्न्स का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 की गति बढ़ाई जानी है। इंजन बर्न्स के जरिए चंद्रयान 3 को ऐसी ट्रैजेक्टरी पर डालने की कोशिश की जाएगी जो चांद की कक्षा से टकराती हो और फिर से चांद की कक्षा में छोड़ा जा सके। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ये रास्ता इसलिए चुना है क्योंकि इससे कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी काम चलाया जाता है। यानी ये उपाय थोड़ा ज्यादा समय लेने वाला जरूर है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके आइए आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 का अब तक का सफर कैसा रहा है। इसकी लॉन्चिंग हुई 14 जुलाई को, जबकि पहली कक्षा में ये 15 जुलाई को पहुंच गया। फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान नेशनल असेंबली में उनका दिया बयान है। 18 जुलाई को तीसरी कक्षा में चंद्रयान 3 ने प्रवेश किया। चौथी कक्षा 20 जुलाई में ये प्रवेश कर चुका है और 5वीं कक्षा में आज ये संभावित है कि प्रवेश कर सकता है और ये आज का दिन काफी अहम होगा चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 2 जो कि आखिरी मोमेंट पर एक तकनीकी खराबी की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया, ऐसे में चंद्रयान 3 में तमाम उन गलतियों को ठीक किया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार सफलतापूर्वक ये चंद्रयान के 3 चांद की सतह पर पहुंच करके वहां रिसर्च करने में कामयाब रहेगा। तो इस पे सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दिया था। देखिए, भारत के 2 छोरों को पश्चिमी गुजरात पानी बहुत गिर रहा है। अगर सामान्यतः वहां पानी की कमी रहती है, अगर सूर्यदेव और चांद के और करीब चंद्रयान और जो पूर्वी हिस्सा है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, वहाँ नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या है। चंद्रयान की आज पहली अग्नि परीक्षा। इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग करें। जो पूर्वी हिस्सा धरती की 5वीं कक्षा में करेगा प्रवेश। उसमें गहराई करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए और जब जल मार्ग से परिवहन होता है, अगले हफ्ते से चांद का चक्कर। और चक्कर काट रहा है। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 मैन्यूवरिंग करके पृथ्वी की 5वीं और आखिरी कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी इस अहम पड़ाव के बाद चंद्रयान का अगला लक्ष्य चांद की कक्षा में प्रवेश करना होगा। सोलर एनर्जी की 2 से 3 बजे के बीच IST यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक चंद्रयान की मैन्यूवरिंग को पूरा करवाएंगे। आज अगर सफलतापूर्वक चंद्रयान पृथ्वी की 5वीं कक्षा में पहुंच जाता है तो फिर 31 जुलाई से 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होने की उम्मीद है। केंद्र भारत में दिल्ली के पास तब ये चांद की कक्षा में पहुंचकर उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। हालांकि चांद की सतह तक पहुंचने के लिए भी चंद्रयान को 5 मैन्यूवरिंग करने होंगे। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। तो चंद्रयान 3 का आज अहम दिन। लोग योग जानते थे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव आया और 173 देशों ने उसका समर्थन किया। ये नहीं, वो द्वितीय प्रस्ताव। चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा टेस्ट, कामयाबी की उड़ान, आज चौथी छलांग। चांद के पास चला चंद्रयान। मिशन चंद्रयान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहा चंद्रयान 3 आज धरती की 5वीं कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान धरती की चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। यानी आज चंद्रयान चौथी बार कक्षा बदलने जा रहा है।
आपके लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर अब तक का सफर जानना जरूरी है। परंतु यदि हम योग का सही 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने बड़ी छलांग लगाई और वो सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में पहुंच गया। 16 जुलाई को चंद्रयान ने कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी के दूसरे ऑर्बिट में एंट्री ली थी। 18 जुलाई को चंद्रयान ने एक और पड़ाव पार करते हुए तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। तब चंद्रयान 3 51,400 किलोमीटर गुणा 228 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में मौजूद था। 20 जुलाई को चंद्रयान ने चांद की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी की चौथी कक्षा में एंट्री की। तब से ये 71,351 किलोमीटर गुणा 233 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। आज चंद्रयान की अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग यानी अगली कक्षा में प्रवेश होगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान